Assalamualaikum dear students. So we are going to solve question number 2 of exercise 7a. For better understanding of this question, first you have to watch the video of question number 1. You can watch this video. You can find this video by clicking on I button above this video. So let's start this question. So as I told in previous video that first of all we have to check that the sequence is increasing or decreasing. So this sequence is increasing because first of all we have -6 and then -5. Negative number जो है जितना बड़ा हो उतना छोटा होता है. So -6 is a smaller number and -5 is a greater number. So we have to add. ओके सो वी हैव टू ऐड 6 में से 5 बनाना हो तो 6 और 5 में 1 का डिफरेंस है. सिंपल. 6 एंड 5 में 1 का डिफरेंस है. सो इफ़ वी ऐड 1 इन 6 वी विल गेट -5. हाउ? सो वी कैन चेक -6 एंड देन +1 प्लस माइनस एंड वी विल यूज़ द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर एंड देन -5. एंड सिमिलरली 5 एंड 3 में कितने का डिफरेंस है? 4 5 2 का डिफरेंस है. ठीक है. सो वी हैव टू ऐड 2 to in 5 -5 to get -3. So now we have -3 and the next term is 0. So if we add 3 in -3 we will get 0. Plus minus 3 minus 3 will be 0. So now we have to add +3. Here we are adding 1, here we are adding 2, and here we are adding 3, and then in next term we are adding 4. 0 plus 4 will be 4. So it's mean that this sequence is increasing. We have to add consecutive integers. 1 2 3 4 को हम integer बोलते हैं. इसका रूल वैसे हमने नहीं लिखना. So we have 4 and then we have to add 5. We will get 4 plus 5 9, and then we have to add 6 and then we will get 15. ठीक है. 4 plus 5 9 होता है and then 16 होता है. I hope you understand well this part. And now in part B we have 47, 38, and then 30, then 23, and then 17, and so on. Okay, so first of all we have to check this sequence is increasing or decreasing. So we can check that this sequence is decreasing. So we have to check what we subtract from 47 to get 38. What should we subtract? If we subtract 10 from 47 we will get 37. तो 47 में से 10 माइनस करेंगे ना तो 37 आता है. तो इसी तरह 47 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 8 आएगा. 47 माइनस 9. 17 में से 9 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 8 एंड देन 3 आ जाएगा 38. So we have to subtract 9. We have to subtract 9 to get 38. Minus 9. Okay. So now we have 38 और 30 में 30 और 38 में 8 का difference है. So it means that we have to add 38 minus 8. So we will get 8 minus 8 0. So here we are subtracting -8 and now we have to add. यहाँ -9 था -8 था तो definitely यहाँ पर -7 होगा. हम check कर सकते हैं. So if we subtract 7 from 30 we will get 27, and similarly here we have to subtract -6 and then here we have to subtract -5 and here we have to subtract -4. Okay. So these type of sequences are called quadratic sequences. मतलब जो कि अब ये जो है these sequences are following a definite rule as well. ठीक है. So आपके जो है वो कोर्स में नहीं है इतनी वो उसकी एक्सप्लेनेशन, बट मैं आपको अभी उसको समझा देता हूँ. 17 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 एंड 12 में से हम 4 माइनस करेंगे सो वी विल गेट 8. ठीक है. अच्छा अब आप कहेंगे कि सर ये तो कोई डेफिनेट रूल नहीं फॉलो कर रही है बेटा. ठीक है. अब देखिए -9 है ना यहाँ पर. -9 से -8 कैसे बनेगा? इसमें 1 का डिफरेंस है तो यहाँ पर +1 कर रहे हैं हम. ठीक है. -9 में से ये आपको ड्रॉ नहीं करना और ज़रूरी भी नहीं है, ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. देखो -9 से -8 कैसे बनाएंगे? 1 का डिफरेंस है ना. -9 बड़ा है, वो छोटा है नंबर, और -8 बड़ा नंबर. बड़े नंबर से सॉरी अगेन -9 इज़ अ स्मॉलर नंबर एंड -8 इज़ अ ग्रेटर नंबर. ठीक है. स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर में जाने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा. ठीक है. सो +1 किया, यहाँ पर फिर +1 किया, यहाँ पर फिर +1 किया. सो
these sequences are following a definite rule, ठीक है. So these type of sequences are called quadratic sequence. डिटेल नहीं है अभी आपके कोर्स में, so next classes में आप जाके करेंगे, तो इसलिए मैं उनको जो है वो इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा. Okay, so now we are going to solve part C of this question. So in part C we have minus 50, then minus 45, then minus 44, then minus 39, and then minus 38. Okay, so this sequence is, first of all we have to check this sequence is increasing or decreasing. This sequence is increasing. We have minus 50 and then minus 45, ठीक है. So नेगेटिव नंबर है, तो दिस सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 45 और 50? 5 है ना, 46, 47, 48, 49, 50. सो माइनस 50 है, सो वी हैव टू ऐड बिकॉज दिस सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग. सो वी विल गेट प्लस 5, ठीक है. अगेन मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ. माइनस 50 प्लस 5, प्लस माइनस माइनस, वी विल गेट माइनस 45. नाउ 45 और 44 में क्या डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है ना, 44 और 45. सो दिस सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग, सो वी हैव टू ऐड प्लस 1 ओवर हियर, ठीक है. एंड देन 44 और 39 में कितना डिफरेंस है? 40, 41, 42, 43 एंड 44. 5 का डिफरेंस है अगेन. सो इंक्रीज हो रहा है, दिस सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग, तो वी हैव टू ऐड 5. यहाँ पर आप सेपरेटली लिख के भी चेक कर सकते हो. माइनस 44 प्लस 5, प्लस माइनस माइनस, वी विल यूज द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर एंड देन वी विल हैव 39. एंड यहाँ पर अगेन 1 का डिफरेंस है बेटा. ओके, सो यहाँ पर रूल तो हमें नहीं लिखना, बट एक जो स्पेसिफिक ऑर्डर क्या है, पहली जो टर्म है उसमें से हमें प्लस 5 ऐड करना है, फिर हमने प्लस 1 ऐड करना है, प्लस 5 ऐड करना है, प्लस 1 ऐड करना है. सो यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म होगी, ओहो हो, ये तो ओके, आई होप ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से. चलें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ. ओके, वी हैव माइनस 38 ओवर हियर. दिस इज माइनस 38, माइनस 38. ओके, सो ये तो आपके बुक में भी लिखा है. सो यहाँ पर हमें क्या करना है? प्लस 5 करना है. सो प्लस 5 करेंगे, माइनस 38 प्लस 5 यहाँ सेपरेटली लिख के सॉल्व करते हैं. प्लस माइनस माइनस, विल यूज़ द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस. सो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3. सो विल गेट माइनस 33, sorry. So we will get minus 33 and then प्लस 5 प्लस 1, प्लस 5 प्लस 1. सो यहाँ पर प्लस 5 ऐड किया, तो यहाँ पर हमें क्या ऐड करना है? प्लस 1. सो वी विल गेट माइनस 32, ठीक है ना. सो आई होप you understand this question. So in part D we have 100, 98, 93 and 90. 100, 98 and then 95, 93 and then again 90 and then so on. Okay, so first of all we have to check that this sequence is increasing or decreasing. Definitely this sequence is decreasing, you can check it. Okay, so what is the difference between 98 and 100? 98 और 100 में कितना डिफरेंस है? 99, 2 का डिफरेंस है. so we have to subtract minus 2. बट यहाँ पर 95 और 98 में डिफरेंस 96, 97, 98. 3 का डिफरेंस है. वी हैव टू सब्ट्रैक्ट माइनस 3 एंड हेयर अगेन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट माइनस 2 एंड हेयर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट माइनस 3. सो यहाँ पर क्या स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है? पहले माइनस 2 हो रहा है, फिर माइनस 3 हो रहा है. सिमिलरली वी हैव टू सब्ट्रैक्ट माइनस 2 फ्रॉम हेयर and minus 3 from here. So if we subtract minus 2, if we subtract 2 from 90, we'll get 88, and if we subtract 3 from 88, we'll get 85. And now we are going to solve last part of this question, that is 1, 3, 6, 10 and 15. 1, 3, 6, 10 and 15. And then so on. We have to write next two terms. So 1 और 3 में कितना डिफरेंस है? 1, 2, 3, 2 का डिफरेंस है. यहाँ पर 2 ऐड किया, यहाँ पर हमने 3 ऐड किया. एंड सिमिलरली 6 में क्या ऐड करें? 10 आता है. 4 ऐड करें तो 10 आता है, ठीक है. सो 10 में क्या ऐड करें? 5 ऐड करें तो 15 आता है. एंड देन सो ऑन वी हैव टू ऐड. यहाँ पर प्लस 1, 2 ऐड किया, 3 ऐड किया, 4 ऐड किया, 5 किया, तो यहाँ पर हमें 6 ऐड करना पड़ेगा. एंड सिमिलरली हेयर वी हैव टू ऐड प्लस 7. Okay, so if we add 6 in 15 we'll get 21, and then if we add 7 in 21 we'll get 28.
So I hope you understand well this question, but still if you have any confusion you can ask freely in comments. I will guide you. But if this video is helpful for you, so kindly like this video, share this video with your friends, and subscribe to my channel. Okay students, take care, goodbye, and Allah Hafiz.